All right, everyone, let's start October and November 2023, variance 21, paper 2. 1 hour, 45 minutes is the duration of this paper. We need to attempt all the questions. There is no choice, obviously, in this paper. And the total mark for this paper is 80. Let's see what we have in this paper. Question number 1. Choose from the list of compound to answer these questions. Since examiner ने मुझे नाम दिए हैं, तो इसका मतलब मैं formula use नहीं कर सकता, मुझे नाम ही लिखने होंगे. Each compound may be used once, more than once, or not at all. Identify the compound that is a toxic gas produced by the incomplete combustion of carbon-containing compound. Toxic gas, incomplete combustion, तो incomplete combustion से carbon monoxide release होती है, right? तो हम यहाँ लिखेंगे carbon monoxide. Turns anhydrous copper to sulfate blue. So ये वाटर का टेस्ट है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है. Anhydrous copper to sulfate is white. जब आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हो, it will turn to blue. Leads to deoxygenation of water in rivers. तो obviously eutrophication होता है, और eutrophication जो है वो fertilizers से होता है, and obviously जो fertilizers हैं वो nitrates की लीचिंग से होते हैं. तो नाइट्रेट, हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है, तो हम यहाँ सोडियम नाइट्रेट लिखेंगे. In aqueous solution gives a white precipitate on addition of acidified aqueous barium chloride. So basically, if you add barium ions and you are getting white precipitates, that means those white precipitates should have sulfate ions, right? So barium sulfate is going to be the right answer for those precipitates. तो देखें यहाँ पर सल्फेट कहाँ पर अवेलेबल है. सोडियम सल्फेट इज द राइट आंसर. सो सोडियम सल्फेट लिख देते हैं, बल्कि हम यहाँ पर इक्वेशन भी बना देते हैं कि एग्जामिनर जो कह रहे हैं उसके मीनिंग क्या है. मीनिंग ये है कि आपके पास बेरियम क्लोराइड है विच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट. ओके, और आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट से विच इज Na2SO4. सो ये कन्वर्ट होगा बेरियम सल्फेट में, और सोडियम क्लोराइड में तो जो बेरियम सल्फेट है उसके आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे. तो वो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स उसी वक्त आएंगे बेरियम सल्फेट के जब आप सोडियम सल्फेट को एज अ सॉल्यूशन यूज करेंगे. कंटेन एन आयन विद अ चार्ज ऑफ -1. -1 चार्ज है, इसका मतलब एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और ग्रुप 7 के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन है, या फिर आयोडीन है, राइट? तो इनमें से कोई एक एलिमेंट हो सकता है. लेट्स सी क्या है हमारे पास. सो हमारे पास है जनाब लेड क्लोराइड. सही है. अच्छा, -1 चार्ज तो नाइट्रेट का भी होता है अगर आपको याद हो. सो ये नाइट्रेट भी हो सकता है. ठीक है, तो आप ये दोनों आंसर मेंशन कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है मोर देन वंस भी हो सकता है. ठीक है, बट जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर की आपके साथ. ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं लेड क्लोराइड लिख सकता हूं, और नाइट्रेट आयंस हैज -1 चार्ज, तो हम सोडियम नाइट्रेट भी लिख सकते हैं. और आप जानते हैं कि ये कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट. तो इसमें एनाइंस नहीं होंगे. इसमें एनाइन है बट 2- चार्ज है सल्फेट में. इसमें जो एनाइन है उसमें -1 चार्ज है. इसमें जो एनाइन है उसमें -1 चार्ज है. तो -1 के ये दो आइंस थे, इसलिए इन दोनों को हमने लिस्ट डाउन किया. ठीक है, so that's the end of question number 1. I hope it makes sense to you. Let's move on to the next question.
क्वेश्चन नंबर 2, ये मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है. Potassium is an element in group 1 of the periodic table. Copper is a transition element. State 2 physical properties of potassium that are different from those of copper. तो सबसे पहली बात तो ये है कि पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है. Potassium has lower density than copper. सेकेंड थिंग के ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो हार्ड होता है. सो हम यहाँ लिखेंगे कि पोटेशियम is soft while copper is hard. ठीक है. पोटेशियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लोअर, जबकि कॉपर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज हायर. ठीक है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट is always greater than group 1 and group 2 element. That's what we have done in the class. That's what you have written in your lecture. So complete the diagram in figure 2.1 to show the electronic configuration of potassium ion. तो सबसे पहले तो हम पोटेशियम की बात कर लेते हैं कि जनाब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19. उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो जाएगा 2 8 8 1. So when we talk about potassium ion, the potassium ion has +1 charge. That means one electron is removed from the valence shell. The configuration is going to be 2 8 8. तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स. एंड दिस इज गोइंग टू बी +1 चार्ज. अच्छा, चार्ज होता है तो पहले नंबर लिखा जाता है, बाद में साइन लिखा जाता है, तो 1+. ठीक है. Next is table 2.1 shows the observation when 4 different metals react with cold water. अब cold water का रिएक्शन मैंने आपके साथ करवाया है, तो देखिए उसने cold water में क्या कहा है, जरा देखते हैं. पोटेशियम बबल्स फॉर्म्स रैपिडली. ठीक है, तो इसका मतलब पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि वो सबसे स्पीड से रिएक्शन कर रहा है. तो हम यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम. उसके बाद वो कह रहे हैं वेनेडियम नो बबल्स इज सीन. तो इसका मतलब वेनेडियम जो है वो लोएस्ट होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा. सो मोस्ट हो गया, लीस्ट हो गया. अब देखते हैं. बबल्स फॉर्म स्लोली एंड बबल्स फॉर्म वेरी स्लोली. इसका मतलब सीरियम इज मोर रिएक्टिव देन यूरेनियम. तो ये सीरियम हो गया और ये यूरेनियम हो गया. Although uranium is not the part of the reactivity series, but it is a part of the question. Cerium is not even the part of the reactivity series, but it is a part of the question because आपने इस conclusion जो observation से judge करनी है position, तो हम position इस तरह से manage कर रहे हैं. ठीक है. Let's move on to the next part. Deduce the number of proton and neutron in the copper atom shown. Proton is a positively charged particle. Neutron is neutral, it has no charge. So when we talk about copper, the copper atomic number is 29, which means it has 29 protons, which means it has 29 electrons. And so 65 minus 29 is 36 neutron. All right. The number of proton is 29. Number of neutron is 36. In the presence of oxygen, copper reacts with sulfuric acid to form copper 2 sulfate and water. Construct the symbol equation for this reaction. वैसे copper is less reactive than hydrogen, which means copper cannot react with dilute acid, right? But in the presence of oxygen, it can react. So this is going to be a copper. This is oxygen, and this is H2SO4. So it's going to be copper sulfate
and ultimately water. Now we need to balance the equation. How many oxygens here? Total 6. तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो जाने चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 लगाइए. टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 4. तो 4 हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ पर 2 लगाइए. हाउ मेनी सल्फेट आयंस हियर? 2. तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर 2 लगाइए. कॉपर 2, तो यहाँ पर भी 2 लगाइए. ठीक है. 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे? 1 मार्क तो बैलेंसिंग का होगा और 1 मार्क जो है वो करेक्ट फॉर्मूलाज लिखने का है. ठीक है. सिंबल्स and formulas. Copper can be used as a catalyst. State how a catalyst increases the rate of chemical reaction. So catalyst lowers the activation energy of the reaction. Okay, next. Name the catalyst used in the contact process. Contact process में हम वेनेडियम 5 ऑक्साइड यूज करते थे, V2O5. क्योंकि वो हमसे नाम पूछ रहे हैं तो हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते, तो इट मस्ट बी वेनेडियम 5 oxide. Give 2 reasons why copper is used in electrical wiring. Because it has a good electrical conductivity as it contains C of electron. It has good electrical conductivity and also very ductile and do not corrode easily. Okay, so that's the end of question number 2, I believe. Let's move on to the next question. Question number 3 seems like this question belongs to rate of reaction. Yes. A student investigate the reaction of a small piece of zinc. Since it is a small piece, इसका मतलब इसका surface area ज़्यादा है. So it has a larger surface area. So इसका rate of reaction higher होगा. Higher rate of reaction. And obviously इसका steeper curve भी होगा, क्योंकि इसका initial rate ज़्यादा होगा. ठीक. And hydrochloric acid at 25 degrees Celsius, temperature को याद रखिएगा, 25 degrees Celsius room temperature पे है. Acid has to be in excess. Complete the equation to zinc solid, because all metals are solid at RTP. All acids are aqueous. Hydrogen is a gas. Okay. ठीक है, तो it's 40, 45, 50, 40, 41, 42, 42 cm³ of hydrogen gas. Total volume of this is hydrogen. 42 cm³ of hydrogen gas. अच्छा, one more thing. ये हाइड्रोजन गैस है, तो ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन गैस को आप कलेक्ट करोगे गैस रेंज में. वैसे हम ओवर वाटर भी कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, बिकॉज हाइड्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट द सेफेस्ट वन इज गैस रेंज. ओके. Deduce the time taken from the beginning of the experiment to collect 39 cm³ of hydrogen gas. 39 cm³ of hydrogen gas. 39 cm³ of hydrogen gas. चलें ये देखते हैं.
this is 39 cm cube of hydrogen gas. सही है, तो reduce the time. The time is going to be, I think time is going to be 150 seconds. Okay. The student repeats the experiment using dilute hydrochloric acid with a higher concentration. As the concentration is higher, rate is higher, more steeper curve, because number of reacting particles is also higher. All other conditions stays the same. Draw a line on the grid in figure 3.1 to show how the volume of hydrogen gas changes when dilute hydrochloric acid with a higher concentration is used. So जब higher concentration होती है तो number of reacting particles जो हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है. जब नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होता है. जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है. एंड सिंस रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, इसका मतलब इससे ज्यादा स्टीपर कर्व होगा, यानी ग्रेडियंट इससे ज्यादा होगा, ठीक है. और चूंकि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स की कंडीशन सेम है, इसलिए सेम वॉल्यूम ऑफ गैस हैज बीन प्रोड्यूस्ड, राइट. तो हम यहाँ लिख सकते हैं same volume of gas is produced. So हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं. ओके, बाकी हम इसको एडजस्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है. तो ये आपको कौन सा पार्ट हो जाएगा? बी पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है. ये आपका बी पार्ट 2 है. सो सेम वॉल्यूम बट रेट ज्यादा है. ओके. एनीथिंग एल्स? नो. अच्छा, आप नोट करें, जब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा. तो देखें ये जल्दी कंप्लीट हुआ है, ठीक है. ये तकरीबन कंप्लीट हुआ है 200 सेकंड पे, जबकि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट था ये कंप्लीट हुआ है समवेयर अराउंड 125 cm क्यूब पे, राइट. दैट्स द डिफरेंस. जब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट पार्ट, द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस. अगेन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. ऑल कंडीशंस स्टेज द सेम. डिस्क्राइब and explain using collision theory how the rate of reaction differs when the temperature is 30 degrees Celsius, right? So at higher temperature, molecules have high kinetic energy. Molecules have higher kinetic energy. So movement of molecule increases.
If movement of molecule increases, collision frequency increases. Collision frequency is basically the number of collisions in a unit time. Collision frequency increases, and if collision frequency increases, obviously rate of reaction increases. Okay. Next is sample of hydrogen is put into the gas range. The end of the gas range is then blocked so that no gas can escape using kinetic particle theory. Why? Decreasing the pressure in the gas range increases the volume of the gas while temperature stays the same. That's basically Boyle's law relationship, because Boyle's law stays when pressure decreases, volume increases. So when pressure decreases, then gaseous molecules won't be compressed. The space between the molecules increases. And if space between the molecules increases, that means volume increases. Because molecules will move further away from each other. Okay. Let's start question number 4. Concentrated aqueous calcium bromide. Okay. Now we have two electrolytes, calcium bromide in water. So from here we have calcium ion, from here we have hydrogen ion, from here we have bromide ions, and from here we have hydroxide ions. Okay. Okay, predict the product at each electrode. So now according to the series, electrochemical series, which we have discussed, bromide has a higher concentration, और OH और bromide के दरमियान maximum 2 ions का gap है, which means bromide ion will discharge first from the electrolyte in the form of bromine. So product at anode bromine. All right. Now we have calcium ion and hydrogen ion. Obviously, hydrogen ion is closer to the line of discharge, so it will move first from the electrolyte in the form of hydrogen gas. Okay. Next is molten calcium bromide, which means we have only two ions here. The first one is calcium ion, and the second one is bromide ion. We don't have hydrogen and hydroxide ion because situation is going to be molten. Molten में water नहीं होता, ठीक है? Using graphite electrodes, construct the ionic half equation for the reaction at each electrode. Anode पे हमारे पास bromide ions हैं. Bromide ions ऑक्सीडाइज होंगे, ब्रोमीन एटम बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. अच्छा,
ब्रोमीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, तो आप यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 यहाँ पर भी लगेगा, तो जाहिर सी बात है बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है। कैथोड, कैथोड में हमारे पास क्या है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम अपना 2 प्लस चार्ज रिमूव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। आप ये भी तो कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए हैं वो सारे के सारे कैल्शियम आयन गेन करेंगे, और गेन करके वो कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम एटम में। डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर एक्वस ब्रोमाइडाइन। ब्रोमाइडाइन का टेस्ट करने के लिए हम एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। सही है। और जब हम ब्रोमाइड आइंस के साथ इसको टेस्ट करेंगे तो हमें क्रीमी प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज कैल्शियम रिड्यूसेस जिंक टू जिंक, zinc ions to zinc. Okay, that's a redox reaction, guys, also called displacement reaction. Explain in terms of the movement of electron how calcium acts as a reducing agent. Calcium रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं, तो आप नोट करें इसने जिंक आयंस को रिड्यूस करके जिंक मेटल में कन्वर्ट किया और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, तो खुद ऑक्सीडाइज होकर कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब कैल्शियम से कैल्शियम आयन में कन्वर्ट होगा तो जाहिर सी बात है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, राइट। सो कैल्शियम loses its 2 electron from valence shell so that because reducing agent oxidizes themselves. ओके okay? अच्छा, लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो देगा किसका, जिंक आयंस को। तो आप ये बताइए, लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम its valence shell and give it to zinc ions. Okay, state the oxidation number of zinc 2 plus ions। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले हम साइन लिखते हैं बाद में नंबर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे +2, चार्ज में रिवर्स होता है। सल्फर डाइब्रोमाइड is product when sulfur reacts with bromine. Complete figure 4.1 to show the dot and cross diagram for a molecule of sulfur dibromide. Show only outer shell electrons. तो याद रखिएगा कि सल्फर जो है वो ग्रुप 6 का एलिमेंट है, so it has 6 electrons in last shell, जबकि ब्रोमीन जो है वो ग्रुप 7 का एलिमेंट है, so it has 7 electron in last shell। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 7, 1, 3, 5 एंड दिस वन इज 7, 1, 3, 5 एंड दिस वन इज 7। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन सल्फर एंड ब्रोमीन। ठीक है, ये अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से लिख दिए जाए। ओके, ये अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये 2 थे जिनको मैंने यहाँ लिखा है। सही है। और क्लोरीन के जो अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप ऐसे लिख दीजिए, doesn't make any difference। So that's the end of this question। Just hold on a second।
Okay. Next is question number 5. Figure shows the displayed formula of compound A. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कंपाउंड ए में एल्कीन है बिकॉज बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड है, और ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप इसको देखें तो एग्जाम ने इसको इस तरह से लिखा हुआ है COOH। ओके, सो दिस कंपाउंड हैज टू फंक्शनल ग्रुप्स, एल्कीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। Draw a circle around the functional group that is also present in alkenes. Okay, that is a circle. Okay. Deduce the molecular formula of compound A. How many carbon atoms now? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Hydrogen count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hydrogens. And how many oxygens? 2. Okay. Compound A is a solid at 20 degrees Celsius. Describe the motion and arrangement of particles in a solid. Solid की जो मोशन होती है वो तो वाइब्रेशन होती है या वाइब्रेटरी मोशन होती है, और अरेंजमेंट जो होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है और क्लोजली पैक्ड होता है। रेगुलर एंड क्लोजली पैक्ड। Alkene reacts with hydrogen in the presence of a catalyst. Draw a circle around the type of reaction that takes place. All alkenes undergoes addition reaction. और अगर आप हाइड्रोजन की प्रेजेंस से बात कर रहे हैं तो हमने उसको हाइड्रोजनेशन का नाम दिया था, और हमने क्लास में ये कहा था कि हम हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजनेशन, और रिडक्शन। ठीक है, सो आई थिंक एडिशन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेम द कैटलिस्ट यूज। तो मैंने आपसे कहा था कि कैटलिस्ट जो है वो प्लैटिनम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, पलेडियम भी हो सकता है। हमने निकल यूज किया था तो हम निकल यूज करेंगे। ठीक है, फिगर 5.2 shows the structure for compound B। ये एक कंपाउंड B है जिसमें आपके पास एक क्लोरीन है और एक डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, और क्योंकि ये एल्कीन है इसका मतलब इसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। ओके, वो आपसे कह रहे हैं कंपाउंड B कैन बी पॉलीमराइज्ड, ड्रॉ 2 रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर फॉर्म व्हेन कंपाउंड B इज पॉलीमराइज्ड। सो मैंने आपसे कहा था कि जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे आप। इस कार्बन के साथ एक H और एक CH3 है, और क्योंकि एग्जामिनर ने डिस्प्लेड दिया है तो इसका मतलब मैं भी डिस्प्लेड फॉर्म में ही लिखूंगा। मैं उसको कंडेंस नहीं कर सकता हूँ या मैं उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। ये H और ये C है। इसी तरह का एक और लिख लीजिए। सही है, ये बॉन्ड टेक्निकली शिफ्ट होगा बिटवीन दीज टू कार्बन। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा थर्ड मोनोमर का। ठीक है, ऑलराइट। शोज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन है तो इसका मतलब जो मोनोमर है वो आपका अमीनो एसिड होगा। और अमीनो एसिड मैंने आपको क्या बताया? Amino acid is the class of compound which contain both NH2, which is amino group,
and COH group, which is carboxylic group or acidic group. ठीक है. Name the type of monomer used to make protein. Amino acids. Name the linkage in protein. Peptide linkage कहते हैं. अगर आपको याद हो, इस लिंकेज को हमने नाम दिया था अमाइड, लेकिन प्रोटीन में हम इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड. ये हो जाएगा पेप्टाइड linkage. ठीक है. So that's the end of question number 5. Let's move on to the next question. Okay. The equation for the Haber's process used in the production of ammonia is shown. The nitrogen for this process comes from the air. State the percentage by volume of nitrogen in dry, clean air. So this percentage is 78%. State the source of hydrogen for the Haber's process, cracking of hydrocarbon. और steam reforming. मैंने आपको ये दोनों ही बताए और दोनों लिख दिए मैंने आपको. ठीक है. The forward reaction in the Haber's process is exothermic. Okay. Explain in terms of bond making and bond breaking why this reaction is exothermic. बहुत सिंपल सा है. एनर्जी, बल्कि इस तरह से लिखते हैं, मोर energy is released in the formation of bond less energy is absorbed in the breaking of bond ठीक है. Hence more energy is released than absorbed. And therefore reaction is exothermic. The transfer of thermal energy in a chemical reaction is called enthalpy change. Write the symbol of an enthalpy change. Enthalpy change is delta H. और तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो साइन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव साइन. ठीक है. एक्वस अमोनिया इज बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज एन एल्कीन. Aqueous ammonia reacts with dilute nitric acid to form salt. Name this salt ammonium nitrate. इसको लिखने के ना बहुत सारे अंदाज हैं इसकी इक्वेशन को. फर्स्ट वन, aqueous ammonia is ammonium hydroxide reacting with nitric acid, converting into something what? अमोनियम एंड नाइट्रेट दोनों कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होकर कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनियम नाइट्रेट में. H and OH combine together to give water. सही है. इसको लिखने का एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि ये आपका एक्वस अमोनिया है और ये आपका नाइट्रिक एसिड है. ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे अमोनियम नाइट्रेट में. यानी इस केस में वाटर नहीं आएगा, इस केस में वाटर आ जाएगा. बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है.
नेम द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज्ड टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट फ्रॉम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया। आप जाहिर सी बात है एक सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, और सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करने के लिए आपने एल्कली यूज किया है और एसिड यूज किया है। तो जाहिर सी बात है जब भी एल्कली और एसिड के थ्रू आप कोई भी सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Dilute ethanoic acid reacts with aqueous calcium hydroxide. As a result, calcium ethanoate and water is produced. That's a very very important reaction. बच्चों को ये इक्वेशन आनी चाहिए, वो इस वक्त आपको दे रहे हैं, हो सकता है किसी और पेपर में या 2024 के पेपर में वो आपसे ये इक्वेशन बैलेंस्ड करवा लें और लिखवा लें, कंप्लीट करवा के लिखवाएं। सो ये इक्वेशन आनी चाहिए। बाय द वे इस इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। A student reacts 25 cm cube of 0.01 mole per dm cube aqueous calcium hydroxide। इसका मतलब मैं सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। 1000 cm cube of calcium hydroxide gives 0.0100 moles। अगर 25.0 cm cube है calcium hydroxide, so how much moles we have? Oh, how much moles? 0.01 into 25 divided by 1000 is going to be 2.5 into 10 to the power minus 4 moles. All right, let's read the question again. With dilute ethanoic acid using thymolphthalene as an indicator। thymolphthalene का एसिड के अंदर कलरलेस होता है, एल्कली में ब्लू कलर होता है, ये याद रखिएगा। A volume of 12.5 cm cube of dilute ethanoic acid reacts exactly with this much this। Okay, so calculate the concentration in mole per dm cube of dilute ethanoic acid। So from equation I can see that ये मेरे पास 1 मोल है और इथेनोइक एसिड आई हैव इज 2 मोल। सो अगर ये 2.5 into 10 to the power minus 4 moles हैं, तो मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड कितने हो जाएंगे? टाइम्स 2 करते हैं, 5 into 10 to the power minus 4 moles। ये जो मोल्स मैंने कैलकुलेट किए हैं टेक्निकली ये 12.5 cm क्यूब में है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 cm क्यूब से कंपेयर करेंगे, बिकॉज 1000 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 dm। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं 12.5 से। So we'll get the concentration. The concentration of ethanoic acid is 0.04 molar। molar means mole per dm cube, तो ये हो जाएगा 0.04 mole per dm cube। ओके, अच्छा आप नोट करें एग्जामिनर ने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है 0.01 और फिर बाद में लिखा है 00, राइट। यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो मुझे भी एग्जामिनर ने जिस तरह से लिखा है उसी तरह से मुझे भी यहाँ पर कंसंट्रेशन को लिख कर देना है, इसलिए मैं 0.0400 वोल्ट पर डीएम क्यूब लिखूंगा। इस बात का ख्याल रखना होता है आपको पेपर 2 और पेपर 4 अटेम्प्ट करते हुए कि एग्जामिनर ने जिस स्टाइल से लिखा है कॉन्सेंट्रेशन को, जब आप कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे आप भी उसी स्टाइल से लिख के देंगे। ठीक है, स्टेट द कलर ऑफ थाइमोल्थैलीन इन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपसे कहा था कि एसिड के अंदर जो है वो कलरलेस होता है और एल्कली के अंदर ब्लू होता है, तो हम ब्लू लिखेंगे यहाँ। वो कह रहे हैं इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, डिफाइन द टर्म वीक। पार्शियली आयोनाइजेस इन एक्वस मीडियम।
ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में एक आपके पास हाइड्रोजन आयन है और एक आपके पास, हाँ ठीक है, एसिड का है, उसने कोई स्पेसिफिक कहा नहीं है एसिड। अगर वो इथेनोइक एसिड कहते हैं तो फिर हम लिखते हैं, बट हम हाइड्रोजन आयन ही मेंशन करेंगे because he is representing general sort of acid ना, तो all acid contains hydrogen ions, which is why मैंने यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन आयंस लिखा। अगर वो यहाँ इथेनोइक एसिड लिखता तो फिर मैं हाइड्रोजन आयन के साथ एथोनाइट आयंस भी लिखता। सिंस he has given no name, इसका मतलब मैं एथोनाइट आयंस नहीं लिख सकता, ठीक है, इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन आयंस मेंशन करूंगा मैं। नेक्स्ट, dilute ethanoic acid reacts with calcium sodium carbonate. Calculate the volume measured at RTP. RTP के ऊपर जो वॉल्यूम होता है वो 24 dm क्यूब होता है, आप सब जानते हैं। एंड 24 dm क्यूब इज बेसिकली इक्वल्स टू 24,000 cm क्यूब। क्यों ले रहा हूं मैं 24,000 cm क्यूब की वैल्यू? बिकॉज आंसर भी cm क्यूब में डिमांड कर रहा है, ठीक है। When 3.18 gram of sodium carbonate reacts with excess dilute ethanoic acid. Okay, okay. So मुझे मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिवन है, तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेट करूंगा। सोडियम कार्बोनेट 3.18 और सोडियम कार्बोनेट का एमआर होता है 106। याद रखिएगा ये एमआर है, और एमआर आप खुद से निकालेंगे पीरियोडिक टेबल यूज करके। वेरिएंस 22 में मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया आपको, ठीक है। तो मेरे पास मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ जाएंगे 0.03 मोल्स। According to the equation, sodium carbonate और ethanoic acid has 1:2 का रेशो। तो अगर आपने 0.03 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो मोल्स ऑफ एसिड कितने हैं? 0.06 आई बिलीव, या 0.03, यस 0.06 मोल्स। मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या, ओ माय गुडनेस, वेट 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 वेट, माय बैड। Examiner is asking about volume of carbon dioxide, so we need to compare sodium carbonate and carbon dioxide instead of ethanoic acid. So you guys have to be careful during this calculation. तो दोनों में 1:1 का रेशो है। अगर आपने 0.03 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो 0.03। I need to find out the volume. So moles of gas equals to volume of gas, which we need to find out, over volume at RTP, वो 24,000 cm क्यूब होता है, जिसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मोल्स मेरे पास आ जाएंगे 0.03 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 24,000 cm क्यूब। माय गुडनेस, into 24,000, so it's going to be 720 cm cube. Okay, sulfur dioxide contributes to acid rain. State one source of sulfur dioxide in the air: volcanic eruption, a coal-fired power station, okay, describe one method of reducing the amount of sulfur dioxide getting into the air. So हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट अटैच करते हैं कोल फायर्ड पावर स्टेशन के साथ। फ्लू गैस
desulfurization plant which contain calcium carbonate in powdered form. In the contact process, sulfur dioxide reacts with oxygen. Complete the symbol equation for this reaction. When sulfur dioxide and oxygen reacting together, sulfur trioxide gas is formed. So that's easy. Question number 8. Ethanoic acid is manufactured from methanol. आप नोट करें ये भी गैशियस स्टेट में है और ये भी गैशियस स्टेट में है. यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ 1 मोल है. इसका मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर एग्जामिनर पूछ सकता है. फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? एंडोथर्मिक. Predict and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when pressure is decreased and the temperature remains constant. So when pressure is decreased, equilibrium favors towards left hand side where we can have more volume or more number of moles. So on decreasing pressure, position of equilibrium favors towards left hand side because of more number of moles on reactant side, that is more volume. अच्छा, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की टर्म यूज की इसलिए हम भी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की टर्म मेंशन करेंगे. Predict and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when the pressure temperature is decreased and the pressure remains constant. So जाहिर सी बात है किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. तो हम यहाँ लिखेंगे position of equilibrium favors towards right hand side because forward reaction is exothermic ethanoic acid can be produced by bacterial oxidation. Describe one other method of making ethanoic acid by oxidation and alcohol other than methanol. Name of alcohol ethanol, because ethanol की oxidation होती है तो ethanoic acid बनता है. ठीक है. और name of oxidizing agent aqueous acidified potassium मैग्नेट 7. क्योंकि वो हमसे नाम पूछ रहे हैं इसलिए हम फॉर्मूले नहीं लिख सकते. ठीक है. सो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, अगर कोई बच्चा मेथनॉल यूज करता तो ऑब्वियसली वो मिथेनोइक एसिड बनाता, जबकि एग्जामिनर डिमांड कर रहे हैं इथेनोइक एसिड की तो वो हमेशा इथेनॉल से बनेगा. इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेन 1 टू प्रोड्यूस एन एस्टर. ओके, नेम द एस्टर एंड ड्रॉ इट्स डिस्प्लेड फॉर्मूला. तो सबसे पहली तो बात ये कि हम इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं.
हम प्रोपेनॉल लिखते हैं, CH3 CH2 CH2OH, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ऑब्वियसली। अब होता क्या है, होता ये है कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ से H दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर, CH3 as it is, CO as it is, राइट। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन के साथ CH2 है, ऑक्सीजन के साथ, अच्छा वेट वेट वेट, वो आपसे डिस्प्लेट कह रहे हैं, तो यू नीड टू मेंशन ऑल द बॉन्ड्स एंड द एटम्स। ये CH2 आ गया और ये CH3 आ गया। तो जब हम एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं, पहले हम एसिड का पार्ट लिखते हैं, बाद में हम अल्कोहल का पार्ट लिखते हैं। ये आपका डिस्प्लेड फॉर्मूला हो गया, इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं। चलें, बल्कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसका नाम जब नाम देते हैं तो पहले अल्कोहल का नाम आता है, बाद में एसिड का नाम आता है। ठीक है, तो अल्कोहल का नाम हो जाएगा प्रोपाइल, और इस एसिड का नाम हो जाएगा एथेनोएट। ठीक है, so that's the end of question number 8. Let's move on to the next question, question number 9. Table 9.1 shows the melting points and relative electrical conductivities of three elements. Use ideas about the structure and bonding to explain the difference in the melting points of magnesium and phosphorus. Okay. uh, इसका तो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो जॉइंट कोवलेंट होगा, एंड ऑब्वियसली इसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग भी होगी। ठीक है, ये जॉइंट मेटालिक है, और ये है आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर। ठीक, वो मुझसे पूछ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। सो मैग्नीशियम जो है वो फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन मैग्नीशियम, व्हाई? तो हम यहाँ लिखेंगे फास्फोरस has simple covalent molecule with weak van der Waals forces so less energy is needed to overcome this force, hence it has low melting point। ठीक है, मैंने कल भी कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट मैंने शॉर्ट लिखा है, आप शॉर्ट नहीं लिखिएगा, आप पूरा कंप्लीट आंसर दीजिएगा। मैग्नीशियम has a giant metallic lattice so it has a strong
electrostatic attraction between positive ion and C of electron, thus require more energy, hence it has high melting point. The difference in the electrical conductivities of graphite and phosphorus. Graphite has a good electrical conductivity because of the presence of free mobile electron. So due to the presence of free mobile electron, graphite can conduct electricity. Phosphorus has no free mobile electron. Phosphorus cannot conduct electricity as it doesn't have any free mobile electron. Diamond and graphite are different forms of carbon, and these forms are called allotropes. Variance 22 में भी बताई थी बात. Explain in terms of its structure and bonding why diamond is used in cutting tools. Oh, diamond has a giant structure. With a strong covalent bond. Okay. This bonding is strong enough to make the structure harder all right इसलिए वो ऐसे कटिंग टूल यूज होता है a compound phosphorus oxygen and chlorine contain this percentage composition by mass introduce the empirical formula of this compound so first of all you have phosphorus which has a percentage composition of 20.2 उसको divide कर देंगे हम 31 से which is the AR of phosphorus then oxygen is 10.4 divided by 16 chlorine is 69.4 divided by 35.5 so 20.2 divided by 31 is going to be 0.65 16 तो ये राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 0.652 10.4 divided by 16 is going to be 0.65
69.4 divided by 35.5 is going to be 1.95. 1.95, ठीक है. Now which one is the least value? 0.65. तो आप simplest ratio determine करने के लिए इसको divide कर दीजिए. ये 1 हो जाएगा, ये भी almost 1 होगा, and 0.65 is going to be 3. So आपके पास phosphorus 1, oxygen 1, chlorine 3. By the way, वैसे उसने नाम पूछा नहीं है आपसे, बट अगर उन्होंने किसी पार्ट में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए. इसको कहते हैं phosphorus oxytrichloride. So empirical formula is POCl3, और जो empirical formula है वही molecular formula है, याद रखिएगा. So that's the end of this question and the paper is as well. ठीक है, thank you.